أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the words of Holy Quran. So we start today's session of power electronics of chapter number 7, three-phase uncontrolled rectifiers from power electronics book of Ashfaq Ahmad. And last we discussed about the three-phase uncontrolled rectifier, the basic idea that how rectification is important in three phase and the three phase half wave three pulse rectifiers. Why it called a three phase of three pulse? Because in each of phase of three phase it provides a half of that. So a three phase of three pulse it get by the half wave rectifier by each of one of three phase, and by the each of wave of single phase of three phase we got a half pulse. That's the reason three pulses out of six, you can say. And and how can we get all of six pulse in three phase full wave rectifier? So coming towards today's topic, that with the resistive load of three phase half wave three bus rectifier, the basic three phase half wave rectifier consists of three diodes, and the resistive loads which will be discussed in coming diagram. The circuit can be analyzed by the first determining the period of which each of diode uh, on then applying the appropriate source voltage across the load resistor. So the load which is used in this half wave rectifier is resistive load. Each diode conducts for 120-degree intervals in the sequence of D1, D2, and D3. And the diodes which is used in this three phase of half-wave rectifier are in quantity of three: D1, D2, and D3. Each of one, a single diode can be connected to give the combined output voltage V naught, which going to be discussed in upcoming figure. At any given time, the most positive instantaneous voltage turns its responsive respective of diode on. The diode connects its most positive source terminal to the other two diode cathodes. And therefore, only the one diode is on at any time, ignoring the movement of switching. The sudden switch over from one diode to another called the commutation. Commutation means the consistency, the continuation of current of voltage of wave is called commutation without the disruption. So, so this is the basic idea of three-phase half-wave rectifier. Okay, coming towards the input voltage waveform, that would be Vs providing from this side, the source voltage of three phase of three wired system providing from this side. And they used to find the period when the each diode is on. Consider the interval between 0 to 30 डिग्री. ये वो इंटरवल है 0 to 30 डिग्री का जिसके अंदर हमारा सिग्नल साइन वेव का दैट इज प्रोवाइडिंग टू दी डायोड 0 to 30 degree. During this time, the phase voltage VCN is higher than both VAN and VBN. As a result, diode D3 forward bias and the output voltage V not become equal to the VCN. And during this time, we can see that uh, the concept of this rectification of three-phase uncontrolled half-wave rectifier is that the three-phase source voltage is coming from this side in the connection of star to star connection. Sorry, delta to star connection. Delta is from red, yellow, blue, making one to another in this series on last one towards this side to become a delta. And towards the star connection, it forms all the three common points become a common point that is we called a neutral,
and each of one providing from the diode 1, diode 2, diode 3 towards the resistive load. So the source voltage which is coming toward the diode D1, D2, D3, A, B, C respectively from this side, and the consistent current wave of each of one diode I of A, I of B, and I of C are coming from this side. Each of wave that VAN, VBN, and VCN, these are the three waves of three phase. In the source voltage will looks like this form, and further each of one conducts at the time. Each of one conduct this gap we called 0 to 30 degree. The sample of signal we can get from the supposition from the input, and further the single phase, the three phase of single of VAN we get at this level. Further, VBN and VCN, this we called a three pulse, three phase half wave rectifier, because out of six we get the three pulses of three phase of six pulse of source. And these three pulses of half wave rectifier we can get, and we can suppose it's a half wave rectifier. Each of one we can see in this form, and the continuation of commutation, you can see the continuation of signal can be fulfilled in this wave form, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सिग्नल की कंटिन्यूएशन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, बल्कि जब एक वेव सिग्नल अपना कंप्लीट कर लेती है तो दूसरी वेव वहां से शुरू कर लेती है फर्दर, और जब दूसरी वेव अपने सिग्नल कंप्लीट कर चुकी होती है तो तीसरी सिग्नल जो है अपना सिग्नल फर्दर स्टार्ट कर लेती है। तो जो आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल होता है वो कंसिस्टेंट रहता है यहाँ पे VAN, VBN, VCN के मुताबिक, और उसके हिसाब से ये चीज़ कंटिन्यूस रहती है। आउटपुट वोल्टेज एवरेज एवरेज जो है हमारी थ्री फेज में, चाहे वो हाफ वेव हो, काफ़ी हद तक बेहतर रहती है सिंगल फेज के मुकाबले में, क्योंकि इसमें आपकी तीन वेव एट अ टाइम मिल रही होती हैं। फर्दर इसके बाद जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो करंट की कंटिन्यूशन होती है वो करंट की वेव किस तरीके से नजर आती है। तो हर एक डायोड ईच ऑफ वन फेस के मुताबिक कंडक्ट कर रहा होता है। तो पहला जो डायोड होगा हमारा कंडक्ट कर रहा होगा सोर्स वोल्टेज के मुताबिक, वो पहली कंटिन्यूशन इस तरह से रहेगी। बाकी के दो डायोड VBN, VCN ऑफ रहेंगे। फिर VBN आपका ऑन रहेगा और अगले में VCN ऑन रहेगा, और उसके मुताबिक अगर हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज तीनों का कंबाइन करें तो हमें आउटपुट वोल्टेज थ्री फेज ऑफ थ्री पल्स का इस तरीके से नजर आएगा, IA, IB और IC के मुताबिक। तो ये उसी सिग्नल की जो अभी हमने डिस्कस की थी वेव फॉर्म्स, उसकी ये करंट वेव्स हैं। फर्दर इस कंटिन्यूशन को अगर हम देखें तो 0 to 30 डिग्री के दरमियान जो डायोड ऑन रहता है वो आपका D3 है, और जो ऑफ रहते हैं डायोड वो D1 और D2 हैं। ये उस कंटिन्यूशन ऑफ इंस्टेंट की बात है। VAC और VBC जो है वो आपके डायोड जो हैं वो आपकी ऑन रहते हैं जिस स्टेट में आई मीन वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं इस दौरान VD1, VD2, और VC, VD3 जो है वो डायोड वोल्टेजेस के तौर पे ऑफ रहते हैं। At the same instant from the 30 degree to 150 degree, डायोड D1 ऑन रहता है और ऑफ D2, D3 रहते हैं। आफ्टर दैट 150 डिग्री से 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक D2 का जो डायोड है वो ऑन रहता है, और D3 एंड जो D1 है वो आपका ऑफ रहता है। आफ्टर दैट 270 डिग्री से लेके 390 डिग्री तक जो डायोड आपका ऑन रहता है वो D3 है, और D1 से D2 के जो डायोड्स हैं ये दोनों ऑफ रहते हैं। फर्दर ये कंटिन्यूशन जो है आपकी थ्री फेज में मुसलसल जारी रहती है एट दी फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 डिग्री, और उसके मुताबिक वेव फॉर्म्स आपकी फॉर्म हो रही होती हैं। वी फर्दर कमिंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फेज थ्री पल्स हाफ वेव रेक्टिफायर विद द रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड।
अब पूरी की पूरी डायग्राम जो हमने पिछली पढ़ी थी वो सेम थी, बस एक चेंजेस इसमें ये हुई है कि इंडक्टिव लोड है आपका, वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। और इंडक्टिव लोड लगने की वजह से जो तब्दीली वाकई वेव फॉर्म में होगी बिलखुसूस करंट की वेव में, वो हम यहाँ पर देख सकेंगे। तो फर्दर सोर्स वोल्टेज हमारे इस तरीके से ही प्रोड्यूस हो रहे होंगे, आउटपुट जो वोल्टेजेस हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इंडक्टिव लोड की वजह से जो हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, D1 और D2 पहले फेज में, पहले डायोड के इंस्टेंट पे 2 और 3 ऑफ रहेंगे। फिर जब IB आपका ऑन रहेगा तो 1 और 3 ऑफ रहेगा, और इसके बाद जो IC है उसका तीसरा डायोड ऑन होगा और बाकी दो ऑफ रहेंगे, और इनका एवरेज वोल्टेज जो हमारा बन रहा होगा इंडक्टिव इंडक्टिव वेव फॉर्म की नतीजे में करंट की वेव फॉर्म वो इस तरीके से नजर आएगी। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ three-phase half-wave three-pulse rectifier with the resistive plus inductive load can be looks like. So after that, अब तक कोई अगर सवाल किसी के ध्यान में हो, you can feel free to discuss regarding the question. I will answer the kind of question and resolve your queries. Today the topic which we discussed in our lecture is about three-phase half-wave three-pulse rectifier with the resistive load, the all kind of concepts regarding the waveforms of voltages, individual waveform of voltages, and individual current waveforms, average voltage and average current waveforms. After that, we discuss the concept of three-phase, half-wave, three-pulse rectifier with resistive and inductive load, and the concept with the connection of inductive load we also discussed in today's session. So that is all about today's session. In next session, we discussed about the concept of three-phase, half-wave, three-phase, six-pulse rectifier, and in three-phase, six-pulse rectifier, the concept which we going to be discussed in our upcoming next lecture. Hope you understand all the kind of concepts. If you have any kind of question, query, and difficulty, you can feel free to ask uh, in comment section as well as the WhatsApp group and in my email address adil.khan@hamdard.edu.pk and adilkhanpakistan@gmail.com. Thank you very much. Allah Hafiz.